Hi guys, வணக்கம் and welcome to Andy's View. இப்போ நாங்கள் எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னா பெங்களூரில் இருக்கிற மாஸ்க் ரோடு வந்திருக்கோம். ரமதான் சீசனில் இந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லாகவே மாஸ்க் ரோட் ஃபுல்லாகவே டிஃப்ரெண்ட் டிஷ்ஷஸ் இருக்கும். லைக் ஹலீம் இருக்கும், அதுக்கப்புறமா கேமல் மீட் இருக்கும். சின்ன வயசுலேருந்து கேமல் மீட் சாப்பிடணும் அப்படின்னு ரொம்ப நாளாக ஆசையாக இருந்துச்சு. ஸோ கேமல் மீட் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ட்ரை பண்ண போகிறேன். அதுக்கப்புறமா சில டிஷ்ஷஸ் எல்லாமே ட்ரை பண்ணி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன். அண்ட் வாங்க, லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி வீடியோ. हाँ, ये तो कैमल है, कैमल का चीखा ये कैमल की चॉप भी बनेगी अभी. ये आपके लिए रेडी हो रहा है ये. थैंक यू. बिस्मिल्लाह कर बरकबा. नो मिक्स. ये जो है रमज़ान स्पेशल है ये जो रमज़ान स्पेशल है कैमल. ओके. कैमल का शीख मिलेगा, कैमल का चॉप मिलेगा, फकर फाल मिलेगा, सी फूड मिलेगा, बीफ चिल्ली, चिकन, चॉप, हर जो होना वेराइटीज़ मिलेगा. रमज़ान का स्पेशल है ये. रमज़ान के बाद कैमल नहीं मिलेगा. रमज़ान में स्पेशल काटते हैं हम. ये रोज़दारों के लिए, सबके लिए है ये पिज़्ज़ा टाउन के अंदर फेमस है ये कैमल चॉप, कैमल शीख. सर प्राइस बता दो उसका. इसका प्राइस 150. 150. हाँ. ओके. 150. ओके. 1 प्लेट. ये वेरी टेस्टी रहेगा और बहुत मज़ेदार मिलता है इधर पे पिज़्ज़ा टाउन पे. सर एड्रेस बता दीजिए. ये पिज़्ज़ा टाउन ये आके सेवरी के एकदम ऑपोजिट ये शॉप है. ये शॉप में आपको जो होना आपको मिलेगा. ठीक है सर, थैंक यू. वेलकम. கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கார்பியன் சிக்கன் வாங்கியிருக்கோம். டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்குது. லைக் கேஎஃப்சி சிக்கன் டேஸ்ட் மாதிரியே இருக்குது கைஸ். ஸ்கார்பியன் சிக்கன். Very tasty. Good taste. Guys, camel cheek ஓட டேஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குது. இதில் போட்டிருக்கிற மசாலாஸ் அண்ட் உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. அண்ட் டேஸ்ட்டுமே ஃபஸ்ட் டைம் நான் சாப்பிட்றேன். ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை வந்து ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ லொக்கேஷன் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சாரி கைஸ், ப்ராப்பராக வீடியோ எடுக்க முடியல. ஃபுல்லாக மழை பெய்யுது. ஸோ ஐ எம் வெரி சாரி. उसीलिए बीफ का गोश्त मिला के देते हैं करके, उसीलिए रखते हैं ये. बोलो भाई, कैसा है टेस्ट? Taste is amazing, but you find the difference also, like what is beef and what is that. Its oil is different. Like when you eat it is like a beef only, but they have also roasted it very well. 150 का है. 2 पीस है. 2 है. கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பீஃப் காடி வாங்கியிருக்கோம். பீஃப் காடியோட டேஸ்ட்டுமே நல்லாயிருக்கு. அண்ட் லைட்டாக சால்ட்டியாக அண்ட் இதில் போட்டுருக்கிற மசாலாவும் டேஸ்டியாக சூப்பராக இருக்குது. ஜூஸியாக ஒரு லைட்டாக ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவராக. भैया आपका नाम बोलो. हाँ, मेरा नाम सुहेल अहमद. बोलो यहाँ क्या स्पेशल है? यहाँ पर बहुत कुछ स्पेशल है. कैमल है, बीफ है, चिकन है, सी फूड है. ओके. हाँ, चिकन में भी आइटम है, सी फूड में आइटम है, कैमल में आइटम है, बीफ में आइटम है. आप चाहिए तो ट्राई कर सकते हैं. यहाँ का स्पेशल आके बिच्छू कबाब है.
चिकन बोनलेस चिकन आता है, इसका नाम बिच्छू कबाब। ओके बीफ भी है ना, बीफ बीफ। ये है क्या तंगड़ी कबाब है, हैदराबादी स्पेशल ओके तंगड़ी कबाब। ये है क्या हरे मसाले का तीतर, बटर बटर, तीतर हाँ तीतर। और ये गोल्डन तीतर, देखो ये तंगड़ी कबाब लाल मसाले वाला। ओके बोनलेस फिश, ये आगे बोनलेस फिश। अगर से एक भी बोन आ गया तो 1 लाख रुपया चैलेंज है। हाँ ये आगे चिकन ड्रम स्टिक, सबको तो पता होगा। एक चिल्ली प्रॉन्स 150 को 2 पीसेस आता है। फ्राई कर लेगा शाबाश। गोल्डन प्रॉन्स, इधर इधर इधर, ये आके गोल्डन प्रॉन्स है ये। देखो अरे भाई फ्राई नहीं नहीं, दो इधर, ये गोल्डन प्रॉन्स है ये। ले चलो मच्छी दे वो पीछे देखो। ये देखो सबसे स्पेशल ये KFC में जाको आदमी 500 पूछे देते, यहाँ 100 रुपये पूछे देते नहीं। KFC बोनलेस 100 रुपया। ये आके रेशमी प्रॉन्स है ये, रेशमी प्रॉन्स, हाँ सिल्क प्रॉन्स। फिर भी रखा वो देखो सिंगापुरी स्टिक, ओ भैया क्या हो ना बोलो इधर रे। हाँ ये देखो चिकन लॉलीपॉप, बीफ कैमल सी फूड कैमल आओ इधर, आओ इधर आओ कैमल। बादशाह फिश, पॉपलेट ब्लैक ब्लैक फिश में आता बोन। ओके ब्लैक हाँ। पॉपलेट कितना वो ये आपको 250 रुपये की है, 300 रुपये वाली है। 250 350। ये बटर फिश है, ये बटर फिश खाने में सेम बटर जैसा रहता है, सॉफ्ट फुल सॉफ्ट। आजो क्या है भाई? भैया वो लॉलीपॉप है भैया, वो लॉलीपॉप। गोल्डन चिकन, अगवानी बिलबिला कबाब भी है तो। चिकन कबाब, रेशमी रेशमी चिकन कबाब। ओके अरे बोलो भाई क्या टेस्ट है? वेरी नाइस, वेरी स्पेशल, डिफरेंट वन। स्पेशल क्या स्पेशल है बोलो? The chicken is different, looks different here, and the sauce they have used also is different. Freshly made. கைஸ் எம்பயர் ஈஸி பைட்ஸில் வந்து சிக்கன் ரோல் வாங்கியிருக்கோம். இங்கே இருக்கிற ரோலே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அண்ட் சூப்பர் டேஸ்டியாக இருக்குது. இந்த மாதிரி ரோல் நான் சாப்பிட்டதே இல்லை. லைக் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக அண்ட் இதில் இருக்கிற ஸ்டஃபிங்ஸ் எல்லாமே கிளாஸாக இருக்குது. சாரி கைஸ், ப்ராப்பராக வீடியோ எடுக்க முடியல, ஃபுல்லாக மழை பெய்யுதுங்க.
இருக்குது கைஸ். ரோஸ் மில்க் டேஸ்ட் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா சின்ன சின்ன ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே போட்டிருக்காங்க. லைக் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக மஸ்ட் ட்ரை. मोहब्बत की शरबत வந்து மஸ்ட் 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 ட்ரை. It's my life. It's my life. It's now or never. Hi Andy viewers, so we are at this Mosque Road and Carry Fresh. So we just came across a very amazing free demo service here. We have with us Sajid, who is just presenting us some good like liquid, natural herb liquids. So can you just tell us about some of them liquids? Yeah, sure. So we at Panchatan, so our brand is called Panchatan Naturals, and the motto is to serve natural syrups, all natural syrups, as you can see. So the idea is to move public from consuming drinks with artificial sweeteners and moving them on to something that was always consumed traditionally. So today we have 4 varieties, four products in our brand. One is Nanari syrup, one is rose syrup, lemon ginger and lemon barley. So all of these 4 syrups are made out of all natural ingredients, and you can just consume it at the comfort of your home. You can just add some water into it, dilute it and consume it. So our Nanari syrup, which is the flagship product, it's made out of these roots. So you can smell them. So these roots are basically available on the hilly regions of southern part of India, and this has been very locally done and very adulterated all this while. But today that's the exact thing we're trying to change. We're trying to give a very hygienic package, and the syrup itself is made in completely hygienic conditions. So what is the shelf life here? So the shelf life of this particular product is about a year. Yeah. So, about a year. Yeah. So After opening yeah. or before opening? So either ways. So if you don't open it, the shelf life is much longer. So if you open and start consuming it, I don't think it's going to last a year. So you won't be able to resist it. Yeah. Okay, that's good. So this is like first month you are just running here, like, or what? See, we've launched our company in the middle of a pandemic, and we've seen all sorts of crazy rides that we could possibly. This is one full year that we've gotten, and we're trying our best to make this product reach as many people as we can. So all of these are samples here today. So we are giving out samples to as many people as we can, and communicating to them that these are the best products that one should have, rather than having some artificially sweetened products. So friends, I myself have tried and tested it. So it's really having a natural element in it. So especially with this one, I think it is Nanari. It's a Nanari one, and really it's a very natural element having in it. So if you are nearby somewhere, just come and try. What is the cost of this bottle? This is 180 rupees per bottle. Okay, you have to dilute it or what? Yeah, it's a concentrated bottle. It's a concentrated bottle. Yeah, so you use 1:4 is the ratio. 1 part of the concentrated syrup and 4 parts of water or soda, however your palate wants it to be. That's good. 180 rupees for the bottle, and it's a 1:4 ratio. You have to dilute it in the water and out. Please, if you're trying to get a natural herbal drink, please come and try it. Thank you. Right, thanks. So hi all Andy viewers, so we are at the end of this video. So it was a very amazing experience coming to this Mosque Road, and especially at the time of Ramzan and Easter. So today is the Easter day. Yeah, so we tried a lot of unique cuisines, and you might be seeing in the video also. And please, whenever you get a time, please do come in this Ramzan time to eat all those different and varieties of dishes here. And thank you for watching.
Stay tuned for our new video. Bye. கைஸ் நீங்கள் ஃபுட்டீஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். பெங்களூரில் இருந்து நீங்கள் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணல அப்படின்னா வந்து மஸ்ட் ட்ரை. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். See you, Tata, bye bye from Andrew and Neil.